Come to me with solutions, not problems. तो तुम्हें रखा क्यों गया है? I don't completely agree with what you just That said. is amazing क्योंकि आपको करना भी नहीं चाहिए. You, अगर वो US में और आप इंडिया में हो, I don't know, find midpoint, maybe Europe, I don't know, to find ways to खर्चे करने के. No. We do not live together. We have this beautiful arrangement के and आज के एपिसोड में हम टैकल करने वाले हैं 3 चीज़ों के साथ 3 मैसेजेस के बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहला जो मैसेज है वो आया है जहाँ पे there is this person who is stuck in a love triangle between his cousin, best friend, and वो अपने इस लव ट्रायंगल को कैसे नेविगेट करे. The second message is from a person जिसने समझा था रिलेशनशिप लेकिन आ गया सिचुएशनशिप और अब बात चल रही है अबाउट अ ब्रेकअप. हाउ डज वन डील विद दैट? थर्ड जो प्रॉब्लम है, जो मैसेज आया है वो है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में जो कि इंडिया और यूएस के बीच में है. सो हाउ डू वी नेविगेट अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? हाउ डिड वी नेविगेट आवर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? इसके बारे में भी बात करेंगे. तो आई थिंक स्ट्रेट अवे लेट्स गेट इनटू टुडेज एपिसोड. लेकिन अगर स्ट्रेट अवे दो ओके गे अवे और व्हाटएवर, लेकिन स्ट्रेट और गे और अ नालायक और अ होमोफोब जो भी हो, जाके सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को. 5K सब्सक्राइबर्स इज व्हाट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ. एंड अगर नहीं मिलेंगे मुझे 5K सब्सक्राइबर्स तो इसको आज खाना नहीं मिलेगा. You've got to change your script now. I Why? can Swiggy it myself क्योंकि मैं हूँ आत्मनिर्भर. We'll see. विंटर इज कमिंग और अगर आप इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं या फिर जहाँ पे भी दुनिया में आप रह रहे हो और अगर आप विंटर आपके आसपास है तो हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी है. एंड इट्स अ ग्रेट वेदर टू फॉल इन लव बट ऑल्सो fall out of it. And I think it's scientifically proven बब्बा के विंटर या फिर ये जो कुछ महीने होते हैं people are more prone to falling into mental health issues because gloomy होता है बाहर, सूरज नहीं निकलता है. But brighter side ये भी है कि you can see this as your winter arc. What is winter arc? जरा educate कीजिए लोगों को. Winter arc is basically the time that you're taking during the winters when it is all gloomy and everything's like in a lull period. तो आप वो समय ले रहे हैं अपने आप के लिए to change your and investing in yourself to change into a better person. खुद पे काम करने के लिए. But I think honestly मेरे को बहुत ही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लग रहा है क्योंकि हमारे देश में ऐसी तो ठंड होती नहीं कि 5 बजे सब बंद हो गया. That you have so much time to yourself. दिल्ली विंटर्स के अंदर आपको वैसे भी रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता. But if that comforts you, please जाके रजाई में बैठो. लेकिन आज टाइम आ चुका है रजाई से बाहर निकलने का. My name is Yogi and my name is Kabir and this is not a therapy session का brand new show. Alright, so starting with the first message, follow along because this is a long one. This one comes from Rajit, who's a 21-year-old studying in Bhubaneswar, Odisha. I love my best friend Akash. We were doing really well. We were more than friends in many ways, both physically and emotionally. I met him in 2022 at our college. We are in the same department, that's psychology. Our families got close and we became even closer. One day, he randomly asked me about my desires, so I told him I'm into men and not women. He was okay with it and shared that he was into women. He then asked if I liked someone, and I told him it was him. After college that day, I went to his room and lay on the bed. He came closer, hugged me, and touched me in a way no one ever had before. I reciprocated. As time passed, he started coming to my home and would stay for a day or more. In February 2024, my cousin's sister came to Bhubaneswar for a job exam and stayed at our home. Akash was also there. Slowly, I noticed his behavior change. He talked less to me and more to my cousin's sister. Akash told her everything I had shared with him about being gay and liking him. Whenever I was around, they would behave strangely. One day I saw their chats and realized my cousin's sister had fallen for him and Akash was reciprocating her feelings. We had a huge fight and now Akash and I haven't spoken in 3 weeks. My cousin's sister and he are really close and are in a relationship now. And I feel I can never trust anyone again. रजीत, सबसे पहले तो आई एम सॉरी समवन आउटेड यू. चाहे आपकी कज़न सिस्टर को ही उसने बताया हो, बट
आपके कंसेंट के बिना किसी ने आपकी सेक्सुअलिटी के बारे में किसी को बताया, दैट्स wrong on so many levels. So there's a red flag right there. But having said that, this boy Akash, he was very clear uh, about his sexuality, and he said that he was into women from day one. What he did with you in your room that day, when you told him that you like him, and he touched you, he hugged you, that doesn't make him gay. Maybe he was experimenting with his sexuality, but that's about it. Clearly, what has happened after that, it also somewhere confirms के वो gay नहीं है, because he got attracted to your cousin sister. What happened with him and your cousin sister? Maybe it's infatuation or they are serious. Only time will tell. लेकिन एक चीज़ जो 100% श्योर है कि इस इक्वेशन में, इस रिलेशनशिप में, यू आर द थर्ड व्हीलर, एंड इट्स द वर्स्ट फीलिंग टू बी द थर्ड व्हीलिंग in any equation, ठीक है? And out of everyone, you should be, like, you are studying psychology, you will have to look at your emotions and the situation objectively, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी इस सिनेरियो से निकलने में. And lastly, the fact that you feel like you cannot trust anyone ever again. You are 21, you will fall in love again, you will trust people again, and दोबारा से दिल टूटेगा 100%. But that's life. And heartbreak होता है, and you fall into this mood of listening to sad songs. Please do that. Enjoy करो sad songs वाले जो आपका फेज है उसको, लेकिन किसी भी सैड सॉन्ग को लूप में मत सुनो, उस लूप में मत फंसो. लाइफ की प्लेलिस्ट में आई थिंक देयर आर सो मेनी ट्रैक्स, एंड यू शुड क्विकली मूव ऑन टू द अदर ट्रैक. आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट yeah, that's the only way you can get out of this situation. What do you think, Baba? आपको क्या लगता है? जो इसकी तरफ से रिलेशनशिप था वो उसकी तरफ से सिचुएशनशिप, राइट? बेस्ट फ्रेंड से प्यार, फिर स्ट्रेट फ्रेंड से प्यार, फिर कजन से आउट हो जाना. A lot of complication has happened already. And I know, I think more than him getting betrayed on the love part, I think on some level it is also about losing that best friend, because he started the conversation with that he was my best friend. And to have your best friend do that is probably the worst. So it's worse than a breakup. But now here a breakup has happened along with, in that sense, for him, with a best friend betraying him. So I think इसके लिए काफी ज़्यादा complicated situation हो गई है. But having said that, what you two did was consensually happening. वो आपकी तरफ से true feelings थी, maybe उसकी तरफ से exploration था. He did, like Yogi also said, that he did already tell you that he was interested in girls, so whatever he was doing with you was maybe him experimenting, maybe he's bi, but either way, he did share his preferences with you, that at the end of it, he was interested in girls. So whatever the complication that is there in your life right now, what you need to understand is that you have to cut that umbilical cord of love from this person, because he's neither your best friend and neither the love of your life. These two things are absolutely clear. So yeah, it's time to smell the coffee. Not the easiest way of doing it, not the most convenient way of doing it, not the most pleasant way of doing it, but something that you have to do. But with that, at the end of it, I'm just going to wish and hope and pray for you that you get someone that you deserve, that truly loves you for who you are, and that helps you bring back trust in your life, because that's something that's beautiful and you should and will experience. So yeah, Rajit, this was not your therapy session, but we really genuinely feel that हमारी जो भी अब बातचीत हुई है उससे आपको कुछ हेल्प मिली हो. बट बाबा, रजित की बात से ही मुझे समझ में आया कि अब इसे बहुत टाइम लगेगा मूव ऑन करने में. व्हाट इज दैट वन स्टेप जो आपने किया है पहले टू मूव ऑन फ्रॉम समवन? व्हाट्स दैट फर्स्ट स्टेप दैट यू डू? I don't know. I thought firstly look at the mirror and get a haircut. But maybe that's a little too cliche. But nahi, like please get a haircut. Change what you can. I think what I do is in that case, पता है haircut बहुत बोलते हैं कि cliche है, but मुझे समझ में आती है उसके पीछे की theory क्या है. Because when there's absolutely nothing in your life that is in your control, because you feel that
your life is spiraling, there's one thing that you can control is that, oh, I can decide how I get my hair cut done, and this brings some sense of control in my life, and that's what I would do. बट उसके चक्कर में कई लोग जैसे लड़कियां बैंग्स करवा लेती हैं अंदर, वो breakup ब्रेकअप bangs. से हाँ, उनको but लगता वो है मैं ब्रेकअप bangs नहीं बेटर कर था. सकता ना. हाँ, ब्रेकअप बेटर था, बट या गेटिंग अ हेयर कट एंड यू नो मुंह पे पत्थर रख के मैंने Makeup कर लिया. मेकअप कर लिया वैसा, दिल पे पत्थर रख के, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मैंने- पत्थर रखवा दिया आपने. नहीं, मुंह पे नहीं, दिमाग पे पत्थर पड़ता है. बट या ओके, फेयर इनफ, यू गेट अ हेयर कट. Yeah. आई थिंक मेरे लिए टू मूव ऑन फ्रॉम समवन, आई फील सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट आई स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद देम completely. Like there will be no phone call, no message from my side जो जाने वाला है. खुद को मैं like सबसे पहले ये चीज़ करता हूँ. It's very painful. Yeah, not like putting up blank pictures on नहीं. blank profiles on the WhatsApp display नहीं, or वो giving मैंने- cryptic messages in stories. वो किया मैंने जब एक टाइम पे फेसबुक के ऊपर और ऑर्कुट वगैरह इन सब पे लोग पूरे पूरे गाने लिख दिया करते थे नाम की जगह, वो सब भी किया है. लेकिन लेटर इन लाइफ क्योंकि बाद Stories में भी डालते हैं ना लोग ऐसे हाँ. cryptic सी. सो वो सब ना करते हुए जस्ट ऑल कम्युनिकेशंस क्लोज कर देना इज समथिंग विच हैज़ वर्कड फॉर मी. इट टेक्स टाइम, इट्स वेरी पेनफुल, लेकिन इवेंचुअली it's going to help you. So it has helped me. So I think that's something which I do to move on from anyone. Okay, moving on to our next message. This person is anonymous. 25 साल के हैं ये. He writes, I've been in a relationship for 5.5 months, but suddenly he wants to take a break and just be friends. I don't think that's a good decision for me because we haven't had any fights or issues with anger. What should I do? बताइए बब्बा. I think not having a fight in the relationship in itself should be, ringing some bells and alarm. Yeah, that it's क्योंकि not लड़ाई really- करने के बाद भी रिलेशनशिप में तो रहते हैं लोग. नहीं, but Hi. but I think that is actually that's the other way around. Yeah. You are in a relationship because you also have fights in it, because that's part of being in a relationship. So if it's not happening and if you have a disagreement, probably this is one of your early fights. Then maybe treat that as that, and maybe if you both are able to get over this will become your first fight of the relationship. लेकिन अगर कोई फाइट नहीं हो रही है, that also says a That's lot what I'm about saying. the- Yeah, that's what I said. That's the flag. That's the red flag. That's the first red flag that should alarm you that probably things are not really going as great. But उसके breakup करने के बहुत से reasons हो सकते हैं. Maybe maybe he's bored of it. Maybe he doesn't like the way things are moving ahead. Maybe he likes someone else. Maybe he's just gotten over of the whole relationship thing and wants to be single in his life right now. We don't know. I'm Yeah. saying that there are various reasons. What you have to understand is that rather than really internalizing this to yourself, that maybe you are not really doing good or what is wrong in you, that the relationship is not working, you have to really look at him and see what is he really saying, and not really saying in words but also in the ways he's showing things to you. I think that's something that you have to really realize. And ये तो बात क्लियर है यार कि अगर दो में से एक अगर नहीं करना चाहता तो which means that it doesn't work then. So as much as you would want it to work, if it's not happening from both ways, it's not really happening. What do you think, Pitu? I feel बब्बा कि relationship दो लोगों के बीच में होता है, and if the other person feels कि this is more like a friendship situation than a romantic thing, then there is a little that you can do. वो कहते हैं ना कि you let go of someone, you let go of the person you love. If they come back, they were yours. If they never came back, they were like Never yours to begin with. Exactly. So what you can do is उसको जाने दे सकते हो. And ये जो कहावत है ये कई चीज़ों में सही भी है, लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि 99% times people will never come back. So be prepared for that. And it's a great thing कि उसने पहले ही 5-6 महीने में ही आपको ये चीज़ clearly बता दी है. When I say let go of them
एंड इफ दे कम बैक वाला जो सिचुएशन है, एंड बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि वो ना आए वापस. अगर वो वापस आ भी जाए ना, it's very easy for people to treat you like a doormat if they have done it once. Chances of them doing it again are very high. And इतने कम ड्यूरेशन में रिलेशनशिप के अगर आप हो, unless they move mountains for you, do not get back into that relationship. यहाँ लेकिन एक दूसरी उल्टी गंगा ये बह रही है कि वो इंसान तो आपके साथ बहुत ही like he's been very transparent कि listen, I want to be friends, I don't want to be in this relationship. But यहाँ आप बोल रहे हो कि अरे भाई हमारी तो कोई लड़ाई ही नहीं हुई है, तो तुम क्यों ब्रेकअप करना चाहते हो. जैसा कि बब्बा ने बोला कि आपको हमेशा लड़ने की ज़रूरत नहीं है एक रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए. इफ़ इट्स नॉट वर्किंग फॉर हिम, इट्स नॉट वर्किंग फॉर हिम. मूविंग ऑन इज़ योर प्रॉब्लम. दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डील विद इट. उसका इससे कोई लेना देना नहीं है. Bidu, I'll just add this one thing in what you just said, is that when you say that you let them go, and if they come back to you, you'll know that, you know, they were yours, and they will be yours. लेकिन इस दौरान ना ये letting go वाली बात तो कहते हैं, लेकिन बहुत सी टाइम ना हमें ये रिमाइंडर भी चाहिए होता है कि when you are letting them go, it does not mean that आप उनसे उसी तरीके से प्यार करते रहें. Because what then happens is that if they don't come back to you, that टाइम ड्यूरेशन जब आपको उनसे रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा और आप उनसे उसी तरीके से बिहेव करे जा रहे हैं, then you actually are becoming the doormat, and that's how you become a doormat. So save yourselves that trouble and don't fall for that. That is very very important. और उसके कारण क्या होता है ना, उस ड्यूरेशन में आपकी रिजेंटमेंट और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप ये बोलोगे कि देखो मैं तो तेरे साथ फिर भी वैसा ही था. आई अग्री. आई थिंक जो बब्बा ने अभी बताया, एंड यू नो आपके इस पूरे मैसेज से जो मुझे समझ में आया है दैट यू हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव. अगर सही इंसान को दोगे ना वो लव, और अगर वो सामने से आपको मिलेगा तो आपकी लाइफ ब्यूटिफुल हो जाएगी. एंड अगर ऐसे ही एक वन वे रिलेशनशिप में रहोगे तो ब्यूटिफुल कम और फूल ज़्यादा बन जाएगी लाइफ. हिंदी वाला नहीं, अंग्रेज़ी वाला. सो इट्स अप टू यू. 25 साल के आप हो, थोड़ी ज़िंदगी आपने जी है, बहुत सारी अभी आनी बाकी है. सो मेक योर डिसीजंस वाइजली. या प्यार दो, प्यार लो. सिंपल. Alright, with that, this was not a therapy session for you, but hope it helped. So this third message is from Mr. Joshi, who's a 27-year-old teacher from Vadodara, Gujarat. And he says, I feel very lucky to have found my life partner 3 years ago, and I wanted to discuss our current situation. It's clear to both of us, my husband and me, that we want to spend our lives together. Our love story began in Bombay, but now my husband is in the US and I'm finding the separation incredibly difficult. The time difference makes the communication even harder and it's taking a toll on my mental health. He's more patient, but I am struggling to cope. He asks me to wait for a few more years before we can settle together. What advice would you give me regarding this? How can I convince him to understand my perspective on growing together now? I'd also love to know how it took for you and your partner to finally live together. Okay, so Mr. Joshi, सबसे पहले तो yay, congratulations, you have found the one for you. Yeah, and I love how he's addressing the partner as husband. Husband, very good. I don't think मैंने कभी भी कबीर को बोला होगा. वैसे तो मेरा हस्बैंड है भी नहीं, बॉयफ्रेंड ही है. आई थिंक मैं बॉयफ्रेंड ही बोलता हूँ, बट वेरी क्यूट. एंड लॉन्ग डिस्टेंस बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है. सो जो लोग हमारी स्टोरी को, जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया, उन्हें बता दें कि वी हैव बिन टुगेदर फॉर 9 years नाउ. वी स्टार्टेड विद लॉन्ग डिस्टेंस. कबीर वॉज इन इंदौर, आई वॉज इन बॉम्बे. देन कुछ सालों के बाद हम दोनों बॉम्बे में थे. फिर कुछ सालों के बाद कबीर दिल्ली, मैं बॉम्बे में था. एंड फाइनली अब हम दोबारा से एक शहर में हैं. देयर वर टाइम्स व्हेन वी वर बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग एक घर में ही रह रहे हों. कुछ महीने की बात और है, बट वी हैव नेवर लाइक मूव्ड इन टुगेदर. Yeah. सो उसके बिना भी रिलेशनशिप चल सकता है. इट्स यू हु डिसाइड्स कि मेरा रिलेशनशिप कैसे चलेगा. सो टू आंसर दिस थिंग कि आपने कैसे डील किया अपने रिलेशनशिप
को उस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए दैट यू हैव स्टार्टेड लिविंग टुगेदर. वी डू नॉट लिव टुगेदर. वी हैव दिस ब्यूटिफुल अरेंजमेंट के 4 दिन वो अपने घर रह रहा है, मैं अपने घर रह रहा हूँ, बाकी के 3 दिन either I am staying at his place or he comes and you know stays over at my place, which has worked in our situation For now. for now. लेकिन Mr. Joshi, in your case where you know US और इंडिया का टाइम जोन्स डिफरेंट है, इट्स लॉन्ग डिस्टेंस वैसे ही बहुत डिफिकल्ट होता है. आप बार बार दोहरा रहे हो कि वो सामने से ही इज़ बीइंग वेरी पेशेंट, मैं बहुत यू नो इम्पेशेंट हो रहा हूँ इस चीज़ को लेके. सो इट्स नॉट अ रिलेशनशिप इशू, इट्स अ यू इशू जो कि आप ही उसके ऊपर काम कर सकते हो. बिफोर स्टार्टिंग दिस ब्यूटिफुल लाइफ विद हिम इन द US, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी ज़िंदगी उस तरीके से जीना शुरू करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप और नॉट. अपनी ज़िंदगी को जब तक आप होलसम नहीं बनाओगे तब तक आप यही वेट करते रहोगे कि ओ माय गॉड मैं कब उसके साथ रहना शुरू करूँगा. एंड ट्रस्ट मी, बहुत बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, जब वो एक्चुअल में हो जाती है देन वी आर लाइक अब तो मतलब एक्सपेक्टेशन तो मीट नहीं कर रहा है यार, ये इतना तो मैंने क्या क्या नहीं गिव अप किया इस चीज़ को, मैंने कब से इंतज़ार किया है इस चीज़ के लिए. सो डू नॉट रीच दैट पॉइंट जहाँ पे व्हेन यू फाइनली मीट हिम एंड यू फाइनली आर स्पेंडिंग टाइम विद हिम, यू आर लाइक यार मतलब इस चीज़ के लिए मैंने मतलब इतना इंतज़ार किया है. सो उस चीज़ के लिए वेट मत करो. आप गुजरात में हो, आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ हो, यू आर अ टीचर. अपनी ज़िंदगी को रोक के मत रखो कि मैं US जाऊँगा तो मैं ये करूँगा, US जाऊँगा तो मैं वो करना शुरू करूँगा. अपनी ज़िंदगी को उतना होलसम बनाओ कि यू आर नॉट वेटिंग और यू आर नॉट डाइंग टू go to the US and be with him. I think that is the only thing that will help you be more patient, not just in this relationship, but in life as well. And I think that is something which you need to work on. ये एक relationship, again, this is not a relationship issue. This is a you issue जिसको आपको ही deal करना पड़ेगा. What do you think, Baba? I don't completely agree with what you just That is said. amazing क्योंकि आपको करना भी नहीं चाहिए. No, because I'll tell you what, you should definitely be looking forward to spending your life with him, and that is something that is something that we all crave for, and that is what makes the relationship even more beautiful. And I think in a long distance relationship, one thing though I will tell you this, that when you say that you're in a long distance relationship, understand that long distance is a part of your relationship. It's not the only thing in your relationship. Your relationship is bigger than that. Long distance is a reality of it, is a situation in that relationship. लेकिन आपका relationship उससे बड़ा है. आप उसको कैसे relationship पर focus करें rather than long distance, because of your situation. तो आप, you know, you find ways and means, which I'm sure you must have, considering that you've been together for like three and a half years now. You would have found ways, but I think you have to be a little more intentional in doing that, finding moments and situations that you are doing things together in that. Whether it is, you know, finding some date nights, कुछ schedule करके रखो already. You know, some days he's sacrificing, some days you are sacrificing, and understand this, that yes, of course, he is more patient, which is a great thing, which is a great support for you, which is also a green flag for you to also you know, have that trust in your relationship. Kyunki it's very easy to get distracted, especially when you are so far away from each other. And if that support is being provided to you in that relationship, hold on to it and build on it. That's what I think you should be doing. It's tough, but it's also beautiful, and I think you should enjoy this phase of your relationship, because this will only be one of the, you know, many stories of your relationship going forward. That's what I hope for you. And yeah, I agree. I think जब bigger picture आप देखोगे, when you'll zoom out अपने ज़िंदगी के, ये आपकी ज़िंदगी की कहानी नहीं है long distance relationship, ये एक chapter है. Yeah, and also I think find ways, like you said, I don't know,
I don't know how feasible it is for you. अगर वो US में और आप इंडिया में हो, I don't know, find midpoint, maybe Europe, I don't know, to find ways to खर्चे करने के. No, I mean like मिलने के कुछ तरीके से फिजिकली भी अगर आप मिल सकते हो कुछ तरीकों से आप देख सकते हो, कंसिडरिंग यार क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है एंड ऑफ कोर्स इतना फ्रीक्वेंटली पॉसिबल शायद नहीं होगा फॉर एनीवन टू बी ट्रैवलिंग फ्रॉम द US टू इंडिया. So maybe find ways. Also, it shows you and your will to also put in some efforts. I don't know, plan a trip like that maybe. But I'm sure you would have already thought of it. But this is just me laying it all out for you. And I hope that it really works out for you. Yeah, and clearly. अब देखो, अब तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं. या तो कबीर के कहने पे you work on your relationship more and figure out a way कि आप उसको कैसे strong बना सकते हो, या फिर you can follow जो मैंने बोला कि you work on yourself and then add that to your relationship. Maybe that will help you. So choice है तुम्हारी. Because पता है बात ये है ना क्योंकि आप जो you know what you're feeling is completely valid. I'm not invalidating whatever you felt. Maybe also try and communicate this with him, but also at the same time come up with solutions also. Don't just go to him with problems, but also saying कि देखो मैं ऐसा feel कर रहा हूँ, मैं impatient हो रहा हूँ. What more the both of us can do to make it work? My God, maybe this is what my boss once told me. Not once, every boss tells सारे you that. boss यही बोलते हैं. हाँ, come to me with solutions, not problems. तो तुम्हें रखा क्यों गया है? But this is not the boss relationship. This is much more important. So yeah, maybe. Correct, and this is not your therapy session. But I hope it helped. Yeah. Okay, so before we wrap today's episode, आज का recommendation. क्योंकि हमने अभी रिसेंटली बात करी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में, हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हमने कैसे काम किया था. वी डिड एन फुल फ्लेजेड एपिसोड ऑन Spotify. On our previous podcast called Shuddh Desi Gay. It's a Spotify original. Please go and listen to it. Yeah, so उसका एक एपिसोड है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर. उसका जो लिंक है वो मैं शो नोट्स में डाल दूंगा, तो जाके आप उसको सुन सकते हो. And before you sign off from this episode, please do like, share and subscribe. Because that's something that will keep us motivated to be bringing these things to you time and again. Yeah, and अगर Spotify पे सुन रहे हो तो प्लीज़ हमें रेट करो, शो को लाइक करो. Instagram पे प्लीज़ फॉलो अस. वी आर कॉल्ड योगी एंड कबीर. एंड या बाकी मज़े करो ज़िंदगी में. अच्छा टाइम शुरू हो रहा है. दिस इज द ब्यूटीफुल टाइम टू सर्दियों में धूप सेकने का टाइम आ रहा है गाइस. और क्या चाहिए. And with that, if there's anything that you want to discuss or share with us, please do that as well. A lot of people keep asking me the forms कहाँ मिलेंगे, तो एक बार वो बता दो please. So हम लोग मैं फॉर्म का लिंक हमेशा नहीं रखता हूँ अपने इंस्टाग्राम के बायो में, बिकॉज वी नीड टू ट्रैक कि कितने लोगों ने हमको वो भेजा है. सो जस्ट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. महीने में एक बार हम वो पोस्ट करते हैं अपनी स्टोरीज पे. जस्ट कीप लुकिंग एट दैट स्पेस हमारी स्टोरीज में एंड यू विल फाइंड इट. Yeah, so we share a Google form in which you can go in and sign up and share whatever information that you have to with your message, and we will try and talk about it here on Not a Therapy Session for you. ओकी डोकी, आई थिंक आज का एपिसोड खत्म हो चुका है. एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा. एंड 5K subscribers. And with that, muchas gracias for watching. डिट्टो जो कबीर ने कहा.